ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बुधवार है ना, मम्मा का दिन है। मैंने बहुत बारी बताया होगा, आज फिर से बताती हूँ। सोमवार है शिव बाबा का दिन, मंगलवार है मंगलम भगवान विष्णु का दिन, मंगलम भगवान विष्णु का दिन। बुधवार है मम्मा का दिन, गुरुवार है सतगुरुवार का दिन। बृहस्पति अच्छी दशा बैठ जाती है एकदम। शुक्रवार है शुक्रिया बाबा आपका। शनिचरवार है दे दान तो छूटे ग्रह। संडे है प्रज्ञान सूर्य है बच्चों का दिन। SUN या SON, हाँ संडे है ना। फिर मंडे से नए, तभी 7 दिन के कोर्स का बहुत बड़ा महत्व है। अभी भी मधुबन बैठे 7 दिन कोई अपने आप को पूरा भट्ठी में डाले। जो 14 साल की हमारी बच्ची का समाचार सुना है ना, वो 14 साल के बच्ची का अनुभव मधुबन में 14 दिन में करो। क्यों? वरदान भूमि है, तपस्वी भूमि है, परमात्मा बाप के चरित्र भूमि है। जब ज्ञान सरोवर पांडव भवन में चलती फिरती हूँ ना, जैसे लगता है क्या वंडर है भगवान तेरा। सारे विश्व भर आप लोगों ने देखा होगा, मैंने तो अच्छा देखा, सबसे ज़्यादा देखा है मोहिनी बहन। विश्व भर सारा सबसे आपसे ज़्यादा देखा है होगा ना। ऐसा तीर्थ स्थान कहीं नहीं। सब धर्मों का तीर्थ स्थान है, धर्म पिताओं के भी पिता का। नज़ारा भाई देखो, नशा चढ़ता है, कौन सा तीर्थ स्थान पर बैठे हो। ये तीर्थ स्थान है हर परमात्मा के बच्चे के लिए। परमात्मा बाप का न सिर्फ दर्शन करने के लिए, पर दर्शनीय मूर्त बनने के लिए स्थान है। जो हम आपका हमारा आपका सब दर्शन करे और आत्माओं का सुख शांति प्रेम में संपन्न हो जाए, ऐसे स्थान पर हम रहने वाले हैं। ऐसे स्थान पर बैठ के भगवान के डायरेक्ट महावाक्य सुनते हैं। भगवान बोले और हम सुने तो हर बात में हमको कोई ना कोई कहानी ज़रूर याद आती है। हम जब अबू में आए तो बाबा ने यहाँ बीकानेर हाउस, अलवर हाउस, ये सब हाउस थे, पालमपुर हाउस। तो बाबा की थी राजाओं की सेवा करो। तो बीकानेर हाउस में बीकानेर की राजमाता रहती थी। तो बाबा ने कहा ना सेवा करो, तो हम गई। उनकी ऑफिस शहर में थी छोटी सी। उनको कहा तो मैं राज्य माता से मिलने चाहती हूँ। कहा हाँ तुम राज्य माता से मिलने चाहती हो? अच्छा। मैं वो बहुत भगवान को प्यार से याद करती है। बाबा ने सुबह को मुरली चलाई, दिन में मैं चली गई, अपॉइंटमेंट मिल गई। तो गई राज्य माता से मिलने के लिए। आदि से लेकर के दूसरे किसी को ले जाने का मुझे ख्याल नहीं आता था, अकेली जाती थी। चली गई, इतना प्यार से मिली, इतना प्यार से मिली। तो उसने कभी अपनी भक्ति की जो अंदर भावना, जो किसी को पता भी नहीं था, किसी शेयर भी नहीं करती थी। वो क्या समझेंगे वैसे उसकी बात को। वो उसको ये था, ये जो हमको राजाई है भी, जो भी है ना, भगवान के दया से है।
कहा मैं रात को 12 तक भक्ति करके फिर सो जाती हूँ। जो कोई भी देखे नहीं, सब सोते हैं, मैं रात को 12 तक भक्ति करती हूँ। जब तक विष्णु जी का दर्शन नहीं हुआ है ना, तब तक नहीं सोती हूँ। ऐसे स्थान पर हम बैठे, वो दर्शन, फिर मैं सो जाती हूँ। फिर समझती हूँ बहुत, मैं अंदर से मैं किसको सुनाऊँ, तुम मेरे पास किसने तुमको भेजा है। इनका बाबा ने कहा था बच्चों की सेवा करो, तो मैं आई हूँ आपसे मिलने के लिए। रात उस दिनों में बाबा कहता था जिनको अच्छी तरह से बेगरी पाठ था, अच्छा योगी बनना हो तो 2 से 5, जिसकी आंख बंद न हुए, वी शेप में 25-30 बहनें होती थी। हम बाबा मामा सामने बैठते थे, ऐसी दृष्टि दिया, ऐसी दृष्टि दिया, ऐसे बैठे। वहाँ की लाइट शहर में दिखाई पड़ती थी, वरांडा था। पर बाबा जो ये दृष्टि देते देते कहता है, उस माता को याद किया। मैंने समझा शायद मुझे याद आई होंगी। मैं पूछता हूँ उसको याद किया? बच्ची वो भक्तन है, तुमको जब बोला, तुमने उसको कहा मैं उससे बातें भी करती हूँ। मैंने कहा बाबा बोला। कहा तो फिर तुमको उसको याद करना चाहिए, क्योंकि अभी इमर्ज हो जाए ना बच्ची, बाप से बात करना शुरू कर देवे। ऐसी सेवाएं बाबा ने कराई है। फिर दोबारा फिर कुमार का दादी को लेके गई उसके पास। तो अपन को पहले तो इतना नशा हो, पढ़ाने वाला कौन, पढ़ाई कैसी है, किस लिए पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। बाबा कहते हैं समझने वाले, ये बात समझने वाले बच्चे जो है ना, करोड़ों में कोई थोड़े है, पर ऐसा समझे, हाँ, जो दूसरों देख करके कहे, हाँ, ये क्या सुना रहे हैं, लगे ये ईश्वर के बोल सुना रहे हैं। दूसरा, मीठी बहन, मोहिनी बहन, रात को वरदान की बात निकली ना, परा मुरली बाबा ने कहा लोग सन्यासी माताओं में मांगते हैं वरदान, दो आयुष्मान पुत्रवान भवा, कुछ बनता नहीं, क्या है। बाप तुमको पुरुषार्थ करने वालों को वरदान देता है, वैसे आशीर्वाद भी नहीं करता है। पुरुषार्थ करने वालों को आज बाबा कहता है वरदान देता है। यानी बाबा जो सच्चा पुरुषार्थ करने वाले हैं ना, सफलता उसको वरदान में मिलेगी। पुरुषार्थ में तो सेवा में नेचुरल अपने आप होंगी वह। तो क्या कहेंगे, ये बाबा का वरदान है। कैसे हुई? बाबा का वरदान है। पुरुषार्थ हो तो ऐसा जैसा बाबा कहते हैं, हाँ, 2 कदम बच्चों का 1000 का, 2 कदम बच्चों का, आगे कहते हैं 2 कदम हमारा, 8 कदम उसका। अभी 2 कदम हिम्मत का, 1000 कदम बाप का। वंडर है। सिर्फ पुरुषार्थ में काम पाँव रोक न जावे, स्ट्रोक ना आ जावे, बाबा भी कुछ नहीं कर सकता। क्या करूं, ऐसे हो गया, अलबेलाई। बाबा का फरमान नहीं माना, आत्मा समझ के खड़े होकर के बाबा को याद करो ना, कभी कोई टांग लंगरी नहीं होंगी, शरीर की भी नहीं होंगी, आत्मा भी लंगरा पुरुषार्थ नहीं करेंगी। एक बार बाबा ने कहा था ये लंगरा पुरुषार्थ ही है। ऐसे ऐसे जो बाबा के बोल निकलते हैं ना, वो दिल को इतने लग जाए और सच्चा पुरुषार्थ करने पड़े।
जरा सा भी अंदर एक बह दूसरी, आंख ऐसी हो। आत्म स्थित अब मानी क्या, आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, शुद्ध आत्मा में ईश्वर से ने भरा हुआ है। वो आकर्षण शुद्ध ईश्वर को भी खींचती है। आत्मा मानी ये भी अनुभव करके देखो। मैंने बना निर्मला में ऐसे प्रोग्राम बनाओ, सब ये अनुभव करे, दिल से अनुभव करे। हाँ, आत्मा अपन को समझ, न सब समझ है, मैं आत्मा परमात्मा की, तो बाबा खींचेगा। आत्मा ने अपने आप को यहाँ से फ्री कर दिया बाबा के इशारे से। एक है बाबा का डायरेक्शन, दूसरी है श्रीमत, तीसरा इशारा। समझदार डायरेक्शन पर चलेगा। उठना बैठना खाना पीना डायरेक्शन है। हाँ, ये हमको डायरेक्शन मिले हुए है। तुमको सुबह से चलना कैसे, उठना कैसे, खाना कैसे है। ताक बाबा ने चलना भी सिखाया था। बच्चे साइलेंस में बात नहीं करो, कभी भी वॉक करो ना, 1 माइल 2 माइल 3 माइल यहाँ वॉक करो, साइलेंस वॉक, आपस में बातें मत करो। सिखाया है बाबा ने। बातें करने की आदत बहुत है। उसमें भी बाबा हमको चेकिंग करता था, दीदी को भेजता था, कौन सी बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। जब मधुबन मिला है ना, क्या बात करनी, कुछ बात नहीं करनी, मरना है मधुबन में, बिल्कुल मरना है। आत्मा सारा पुराने अनेक जन्मों के, क्योंकि रावण राज्य में रहे हैं ना आधा कल्प। रावण ने सब कुछ भाग्य से हमारा छीन लिया ना, भगवान से जो राजभाग मिला था। हाँ? किसी को छोड़ा नहीं ना। सन्यासी महात्माएं भी योग बल से जन्म नहीं ले सकते, भले कितने पवित्र ऋषि मुनि है। इतना पावन बनाता है जो सत्य में जन्म ही हमारे योग बल से होगा। इतना योग होवे पावरफुल, इतनी आत्मा इतनी शुद्ध होवे, उसका जन्म भी फिर ऐसा होवे सत्युग में। अपवित्रता की अंश न रहे, वो अपने आप को देख। पवित्रता की वैल्यू, आगे हम पवित्रता सप्ताह पर, वो दिन अभी नहीं है, पवित्रता सप्ताह रखते थे, शांति सप्ताह रखते थे। चक्रधारी बन याद दूंगा शायद, पवित्रता सप्ताह। हाँ। पूरी पवित्रता क्या है अंदर, ठीक, शांति का सप्ताह रखो। तो एक एक घड़ी, एक एक सेकंड भी हमारा चेक करना है, अपवित्रता का टच तो नहीं हुआ संकल्प, या किसी का वाइब्रेशन तो मेरे को असर तो नहीं हुआ। ऐसे हमारे वाइब्रेशन पावरफुल हो, जो किसी का भी अशुद्ध संकल्प चल नहीं सकता। हाँ? एक दिन मधुबन में बाबा साकार में था, तभी हम उस टाइम 500 लोग थे, फर्स्ट टाइम था 500 लोग मधुबन में हुए। पता नहीं बाबा को इतनी प्रेरणा थी, इतना शांत रखा था हमको। तो कोई आए थे, देखा यह आवाज़ ही नहीं है। मंदिरों में जाएंगे, कोई घंटगरिया होगा, कोई दर्शन होगा, कोई पल्लाना होगा, कोई कुछ नहीं होगा। देखते
500 लोग ठहरे हुए, पांडवन छोटा था, हिस्ट्री हाल भी शायद तभी बना नहीं था, बयां बनना होगा। हाँ, आवाज नहीं। अभी हमारे ज्ञान सरोवर पांडव भवन में आवाज ना हो तो जो आज बाबा ने बोले, जो लोग शांति सारी दुनिया में मांगते हैं ना, शांति यहाँ से मिल रही है। ये शांति के देव यहाँ बैठे हुए हैं, देने वाले। एक दैवी गुणों में देव, वो बड़ी बात नहीं है, पर शांति देव, शांति देने वाले। तो ये हमारी जैसी अंदर से भावना होंगी ना पुरुषार्थ की, बाबा पूरी करता है। ये फिर मैं बता देती हूँ। पुरुषार्थ में जैसे दान भी कोई करता है, जैसे भावना से दान करता है ना, रिटर्न बाबा देता है। जिसी प्रकार से जितनी जो सेवा करता है उसको रिटर्न मिल रहा है, जमा है। परंतु उल्टा काम करता है तो जो सेवा की हुई है वो भी निष्फल हो गई। भगवान तो कहा तुमने किया है, जमा है, पर बुद्धि को ताला लग गया, उल्टा काम कर लिया। भगवान से जो लिया वो भी अपने आप खलास कर दिया। भगवान तो दिया था, खलास कर दिया। और फिर से वापस इतना शुद्ध श्रेष्ठ आत्मा सच्चा बने, एकदम सच्चा बने, जो भगवान को फिर रहम आवे मेरे ऊपर। ये भी देखा है, खिम्या रहम, खिम्या बाबा एक दिन में करता है। सच्ची माफ कर ले सच्ची दिल से माफी लेने वाले को करता है। नहीं महसूस किया है, बाबा देखता भी नहीं है, दिल से पश्चाताप करता है, मैंने अपना गमाया, बाबा फिर से, बाबा फिर से। फिर ऐसी खिम्या, फिर रहम आता है, अच्छा बच्चे को फिर से उठा दो, फिर भी मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, तो उसमें स्नेह दे करके चला देता है। बीती को बिंदी हम नहीं लगा सकेंगे, बाबा लगा देता है। हम अपनी भूल को माफ करें ना, मुश्किल हो जाता है। तो बाबा अपनी भूलों को हम माफ कैसे करेंगे? किया है, आईने में दिखाई पड़ती है, मैंने किया है, कैसे माफ करूं? बाबा इतना स्नेह से भूलवा, माफ करके फिर भूलवाता है, चल आगे। अभी ये घड़ियां चल रही है, मानो न मानो, पर थोड़ा बैठ के एक कान में पूछो, इस घड़ियों का मुझे फायदा लेना है या अभी तक करेंगे का ख्याल सब संकल्प आता है। अच्छा तो है, लेकिन ऐसे विचारों में ये घड़ी गंवानी नहीं है। किसी का दोष न देख, किसी का दोष देखा, उन दोष दूसरे का हो गया मेरा, देखने से मेरा हो गया, वो चिंतन में आ गया मेरे। विचार करो, ये बड़ी गहरी फिलॉसफी, डीप जानने की बात है। जिस घड़ी हम दूसरे को दोष को चिंतन में लेती हूँ, दोष दूसरे चिंतन में मैंने लिया, मैंने चिंतन में विचार सागर मथन करके मन मना होना छोड़ दिया, कितना मेरा नुकसान हुआ। पर ये संग से भी फायदा नहीं मिलेगा। संग में बैठे बैठे भी उदासी रोना आता रहेगा, भोगना, दूसरे का दोष देखना। किसी भक्ति में कहते हैं किसका भी दोष चित्त पर मत रखो।
एक भगवान ही है जो हमारा दोष नहीं देखता है। उसका मैं बच्चा हूँ, मैं कैसे देखूँ, न वर्णन करूँ। वर्णन करने तो बाकी भी पक्का हो गया, उसका चला भी गया होगा दोष, पर मेरे पास बैठ गया अच्छी तरह से। वर्णन करने से वो हमारा हो गया, पर मेरी जो अच्छाई है ना वो किसको दिखाई नहीं पड़ेगी, अच्छाई काम नहीं करेंगी। जो कर रहे हैं ना वो भी कर नहीं पाएंगे। तो प्रेजेंट समय गुह्य गति चल रही है कर्मों की। इसलिए बाबा की वार वार हर मुरली में है, बाप तुम आत्माओं को पढ़ाता है। तुम बच्चे देखो पढ़ाने वाला कौन है, क्या पढ़ा रहा है। एक एक बात बाबा की दिल को इतनी लग जाए जो और कोई बात दिल में आ जाए, आ नहीं सकती। इसमें बाबा ने कहा है ड्रामा की अच्छी तरह से समझे कोई विरले बच्चे को आ सकती है। जो हुआ है ठीक, इसमें चाहिए सहनशीलता, एक सहनशीलता का गुण हो। सारे ज्ञान के गहराई में जाने के लिए, अमल में लाने के लिए सहनशीलता बड़ा सियाना बना देती है, चित्त को साफ रखती है, और एकाग्र चित्त रहने में मदद करती है। ड्रामा में की बात अच्छी है, हूबहू बना पड़ा है, बाबा ने समझाया है, कोई नई बात नहीं है, पर धीरे से अपन को समझा करके अडोले चल रहते हैं, जैसे बाबा मामा, जैसे बाबा मामा। इसलिए मामा बाबा का चित्र सामने अच्छा रखते हैं। लोग पूछते क्यों रखते हैं, मैं तो रखती हूँ। चेहरा मम्मा का देख पर अपन को देखेंगे, बाबा का देख अपन को देखेंगे। आईना है ना मम्मा बाबा हमारे लिए। आईने में देखने के पता नहीं चलता है मैं कैसी हूँ, पर मम्मा बाबा आईना है हमारा। उन्होंने कैसे ऐसे लक्ष्मी नारायण पद पाया है वो हमको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। एक घर जाने के लिए तैयार बैठे रहे और सुखधाम में आने के लिए ऐसा क्वालिटी वाला ऊंच पद पाने वाले संस्कार हुए, ऊंच पद के यहाँ इमर्ज हुए संस्कार, प्रैक्टिकल में दिखाई पड़े। बरोबर ये सत्य की स्थापना करने में ही लगी हुई है। अपन को सत्य की दुनिया में आने के लिए वायुमंडल ऐसा ही सेकंड में पांव रखते ही हो जैसे कोई सत्युग में आया है। अच्छा मीठे बच्चे, ये भी देखो न सिर्फ मुरली सुनाने के समय बाबा मुरली सुनाता है, पर सारा दिन बाबा हमारे को चेक करता है, घूमता है। मेरे को तो बाबा देख रहा है क्या कर रही है, ये नहीं समझो तो बाबा नहीं देखता है। ध्यान रखें ना, बाबा हमारा चेक करता है ये क्या पढ़ते हैं या टाइम कमा रहे हैं। मधुबन में आए हैं, बादल भरते हैं, इतना मजा मिलता है। बाबा रिफ्रेश होने आते हैं, बैटरी चार्ज करने आते हैं। तो समय सेकंड भी नहीं गंवाना है। मीठे बच्चे, तुम्हारा फर्ज है सबको अस्थाई, ये बहुत समय के बाद बाबा का शब्द, अस्थाई सुख और शांति का रास्ता बताना। अस्थाई सुख हो गए।
शांति में रहो और शांति की बख्शिश दो। कितना ऊंचा शब्द है बाबा का। शांति में रहो, शांति को की बख्शिश दो। जो कोई घर में आता है, अतिथि आता है ना, कुछ दे देते हैं, दे दो। पर्सन किस गुह्य राज को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए? उत्तर, ड्रामा की जो सीन जिस समय चलनी है उस समय ही चलेगी। अब ये बात ना अच्छी तरह करता, हमारे आवाज़ में मीठा जो मीनिंगफुल शब्द होंगे। जो सीन जिस समय चलनी उस समय चलेंगी, इसकी एक्यूरेट आयु है। बाप भी अपने एक्यूरेट टाइम पर आते हैं, इसमें एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता है। पूरे 5000 वर्ष के बाद बाप आकर प्रवेश करते हैं। यह गुह्य राज समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए। गीत, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। प्यारा गीत है बाबा का हमारा। बदल जाए दुनिया न बदले जो अंदर से पैदा किया है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाबर समझाते हैं, बच्चों को रास्ता बताते हैं। समझाते मना बच्चों को रास्ता बताते हैं शांति धाम और सुख धाम का। इस समय सब मनुष्य विश्व में शांति चाहते हैं। हर एक इंडिविजुअली भी चाहते हैं। मुनि पर नोट करे जिनको ये डिपार्टमेंट हमारी है ना, कैसा लिखना हो, कैसा बताना है, कैसा क्या करना, कैसे हाँ। कौन है निमित्त, वो नोट करे। एंटनी समझता है हाँ, ऐसे नोट करो। हर एक इंडिविजुअली चाहते, विश्व में भी शांति चाहते। हर एक कहते मन की शांति चाहिए। अब वह भी कहाँ से मिल सकती है? शांति का सागर तो बाप ही है। अटेंशन खींचवाओ। शांति का सागर बाप ही है, जिससे वर्षा मिल सकता है। इंडिविजुअली मिलता है, होलसेल भी मिलता है। अभी गायत्री विचार करो कितने ऊंचे शब्द है। इंडिविजुअल भी मिलता है, होलसेल भी मिलता है, एक से मिलता है। यानी सबको मिलता है। जो बच्चे पढ़ते हैं समझ सकते हैं। हम यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं समझ सकते हैं, यहाँ हम शांति का वर्षा लेने के लिए अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। वर्षे में लेने के लिए औरों को रास्ता बताते हैं। विश्व में शांति तो होनी ही है, चाहे कोई वर्षा लेने आवे या ना आवे। बच्चों का फर्ज है, सब बच्चों को शांति देना ही है। यह समझ नहीं सकते 2-4 को वर्षा मिलने से क्या होगा। कोई को रास्ता बताया जाता है, परंतु निश्चय न होने के कारण दूसरों को आप समान बना नहीं सकते। जो बाबा ने कहा उसको ठीक नहीं समझा, अमल में नहीं, तो दूसरों को बता नहीं सकते। जो निश्चय बुद्धि है वह समझते हैं। अभी आओ इस बात, बाबा से हमको तो ये वर मिल रहा है। कौन इसमें दिल से समझते हैं? समझ रहे हो कि
बाबा से वर्षा और वर में फर्क। कोई तो दिन रात वर्षा लेने में ही पुरुषार्थ कर रहे हैं, फिर वो समझते हैं ये बाबा से जैसे हमको वर मिल रहा है, इतना चाहिए बुद्धि अच्छी। वरदान देते हैं ना, आयुष्मान भव धनवान भव भी कहते हैं, तो कहने से आशीर्वाद नहीं मिल सकती है। आशीर्वाद मांगते हैं तो उनको समझाया जाता है तुमको शांति चाहिए तो ऐसा पुरुषार्थ करो। और ये किसको लग रही है बात दिल से? शांति वर्ष के लिए पुरुषार्थ करना, फिर जैसे वर मिल रहा है, किसको ये फीलिंग है ये लेने की? हाथ उठाओ, इस पे हाथ उठाओ, सच्ची दिल से हाथ उठाओ। ये फील सुनते सुनते, जैसे हम ये बाबा की मुरली सुनते सुनते फीलिंग आती थी कि अभी अगर ये कैच कर लेंगे ना तो वर्षे के लिए पुरुषार्थ, फिर जैसे इतना भगवान खुश वर दे देता है। ये घड़ी है भगवानो वाच्य। हाँ, आशीर्वाद मांगते हैं तो उनको समझाया जाता है तुमको शांति चाहिए तो ऐसे पुरुषार्थ करो, मेहनत से सब कुछ मिलेगा। भक्ति मार्ग में कितनी आशीर्वाद लेते हैं, माँ बाप टीचर गुरु आज सबसे मांगते हैं हम सुखी और शांत रहें, परंतु रह नहीं सकते क्यों? इतने ढेर मनुष्य है, उनको सुख शांति कैसे मिल सकती? गाते भी है शांति देवा, बुद्धि में आता है हे परमपिता परमात्मा हमको शांति की बख्शिश करो। वास्तव में बख्शिश उसको कहा जाता है जो चीज़ उठा करके किसको दे देवे। कहेंगे ये तुमको बख्शिश है, इनाम है। बाप कहते बख्शिश कोई कितनी भी करते हैं, धन की मकान की कपड़े आदि की करते हैं, वह हुआ दान पुण्य अल्पकाल के लिए। मनुष्य मनुष्य को देते हैं, शाहूकार गरीब को, अथवा शाहूकार शाहूकार को भी देते आए हैं, पर यह तो है शांति और सुख अस्थाई की बख्शिश। कितनी बाबा की मुरली ये दिल को टच होवे, अभी कोई भी आए शांति सुख अस्थाई होवे किसी पास, यह बख्शिश है। यहाँ तो कोई एक जन्म के लिए भी सुख शांति नहीं दे सकते, क्यों? उनके पास है ही नहीं। देने वाला है एक ही बाप। उनको सुख शांति पवित्रता का सागर कहा जाता है। ऊंचते ऊंच भगवान की महिमा गाई जाती है। समझते हैं उनसे ही शांति मिलेंगी, पर वह साधु संत आदि पास जाते हैं, क्यों? भक्ति मार्ग है ना, तो फेरा फिराती रहती है, बटते हैं चारों तरफ लगाए फेरे। वह सब है अल्पकाल के लिए पुरुषार्थ। तुम बच्चों का भी वह सब बंद हो जाता है। तुम लिखते भी हो बेहद के बाप से, अब लिखते भी हो बेहद के बाप से 100% पवित्रता सुख शांति का वर्षा पा सकते हो, या 100% दुनिया में अपवित्रता दुख और अशांति है, परंतु मनुष्य समझते नहीं है। कहते ऋषि मुनि आज तो पवित्र है, पर पैदाश तो फिर भी विकसित होती है ना। मूल बात यह है, रावण राज्य में
पवित्रता हो न सके। पवित्रता सुखाद सबका सागर एक ही बाप है। तुम जानते हो हमको शिव बाबा से 21 जन्म अर्थात आधा कल्प 2500 वर्ष के लिए वर्षा मिलता है। तुम जानते हो हमको शिव बाबा, मैं फिर से पढ़ती हूँ लाइन, तुम जानते हो, आंखें तो खोलो, हाँ? जानते हो लोरी नहीं मिल रही है, मुरली कोई लोरी सुना लेने नींद करने के लिए नहीं है, सुनते या जैसे लोरी मिल रही है, तो सेना में बैठे हैं, लेने के लिए बैठे हैं बाबा से। 25 वर्ष 100 वर्ष के लिए वर्षा मिलता है, यह तो गारंटी है। आधा कल्प सुख धाम, आधा कल्प है दुख धाम। सृष्टि के 2 भाग है। बाप ऐसे पढ़ा के आंख खुलता है। अभी ये देखो पता चला, आधा कल्प है दुख धाम, आधा कल्प है सुख धाम। उसके लिए राज्य ले रहे हैं, उसके लिए वर्षा ले रहे हैं। हाँ? सृष्टि के 2 भाग है, एक नई एक पुरानी। परंतु नई कब होती है, पुरानी कब होती है, ये भी जानते नहीं है। झाड़ की आयु इतनी एक्यूरेट कोई बता न सके। अब बाप द्वारा तुम इस झाड़ को जानते हो, ये 5000 वर्ष का पुराना झाड़ है। इनकी एक्यूरेट आयु का भी तुमको पता है। और जो झाड़ होते हैं उनकी आयु का किसको पता ही नहीं होता है, अंदाज बता देते हैं। तूफान आया, झाड़ गिरा, आयु पूरी हो गई। मनुष्यों का भी अचानक मौत होता रहता है। इस बेहद के झाड़ की आयु 5000 वर्ष हुए। इसमें एक दिन न कम न जास्ती हो सकता है। ये बना बनाया झाड़ है, इसमें फर्क नहीं पड़ सकता है। ड्रामा में जो सीन जिस समय चलनी है उस समय ही चलेगी। थोड़ी मैं उतावली हूँ, थोड़ी उतावली हूँ, पर उतावला छोड़ना चाहिए, अभी हो जाए ना। जो सीन जिस समय चलनी है उस समय चलेगी। हूबहू रिपीट होना है। आयु भी एक्यूरेट है। बाप को भी नई दुनिया स्थापन करने आना ही है। एक्यूरेट टाइम पर आते हैं, 1 सेकंड का भी उसमें फर्क नहीं पड़ सकता। यह भी अब तुम्हारी बेहद की बुद्धि हो गई। बुद्धि बेहद की चाहिए ना। अभी ये समझने से बहन क्या ठीक है, जयंती बुद्धि बेहद में कैसे जाए। हाँ? बुद्धि बेहद की हो गई। तुम ही समझ सकते हो पूरे 5000 वर्ष के बाद बाप आकर कैसे प्रवेश करते हैं। इसलिए शिवरात्रि कहते हैं, कृष्ण के लिए जन्माष्टमी कहते हैं। कितना अक्षर के लाइन लाइन में। इसलिए शिवरात्रि कहते हैं, कृष्ण की जन्माष्टमी कहते हैं। शिव की जन्माष्टमी नहीं कहते हैं, शिव की रात्रि कहते हैं। क्यों? अगर जन्म हो तो मौत भी हो। मनुष्यों का जन्मदिन कहेंगे, शिव के लिए सदा शिवरात्रि कहते हैं। दुनिया में इन बातों का कुछ भी पता नहीं। तुम समझते हो शिवरात्रि क्यों कहते हैं, जन्माष्टमी क्यों नहीं कहते हैं। उनका जन्म दिव्य अलौकिक है, जो और कोई का हो नहीं सकता। यह कोई जानते नहीं शिव बाबा कब कैसे आते हैं। कितना हमको समझ दे रहा है शिव बाबा कब और कैसे आते हैं। शिवरात्रि का अर्थ क्या है तुम ही जानते हो।
यह है बेहद की रात। भक्ति की रात पूरी हो दिन होता है, ब्रह्मा की रात और दिन तो फिर ब्राह्मणों का भी हुआ। एक ब्रह्मा का खेल तो ही चलता है। अब तुम जानते हो, फिर क्या जानते हैं, अब दिन शुरू होना है। पढ़ते पढ़ते जाए हम अपने घर पहुंच जाएंगे। पढ़ते पढ़ते जाकर हम अपने घर पहुंच जाएंगे, फिर दिन में आएंगे। आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात गाई हुई है ना, आता है। ये पढ़ते पढ़ते हम घर चले जाएंगे। परंतु किसकी भी बुद्धि में नहीं आता है। वो लोग तो कहेंगे कलयुग की आयु 40,000 वर्ष और भी है, सच्चों के लाखों वर्ष है, पर आधा आधा का हिसाब ठहरता नहीं है। कल्प की आयु को कोई जानते नहीं है। तुम सारे विश्व के आदि मध्य को जानते हो। यह 5,000 वर्ष के बाद सृष्टि चक्कर लगाती रहती है। विश्व तो है ही, उनमें पाठ बजाते बजाते मनुष्य तंग हो जाते हैं। यह क्या आवागमन है। अगर 84 लाख जन्मों का आवागमन होता तो पता नहीं क्या होता। न जानने के कारण कल्प की आयु बढ़ा दी है। अब तुम बच्चे बाप से सन्मुख पढ़ रहे हो, अंदर में भाषना आती है। कान तो हिलाओ ना, अंदर में भाषना आती है। हम तो बैठे हैं बाबा के सामने, प्रैक्टिकल में बैठे हैं। पुरुषोत्तम संगम युग को भी जरूर आना है। कब आता है, कैसे आता है, ये कोई भी नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो तो कितना खुशी में गदगद होना चाहिए। तुम ही कल्प कल्प बाप से वर्षा लेते हो, अर्थात माया पर जीत पाते हो, प्रहारते हो। जीत पाते हो, प्रहारते हो। यह है बेहद की हार और जीत। उन राजाओं की तो बहुत ही हार जीत होती रहती है, अनेक लड़ाइयाँ लगती रहती है। छोटी सी लड़ाई लगती है तो कह देते अब हमने जीता। क्या जीता? थोड़े से टुकड़े को जीता। बीच में कोई नहीं, लड़ाई बंद कर दी। बीच में पढ़ने वाले न हो तो लड़ाई लगती ही रहे। बड़ी लड़ाई में हारते हैं, फिर झंडा गिरा देते हैं। पहले पहले तो एक राजा होता है, फिर और राजाओं की वृद्धि होती जाती है। पहले पहले लक्ष्मीनारायण का राज्य था, फिर और राजाएं आने शुरू हुए। जैसे पोप का दिखाते हैं, पहले एक था, फिर नंबरवार और पोप भी बैठते गए। किसके मृत्यु का तो ठिकाना ही नहीं है ना। तुम बच्चे जानते हो, हमको बाबा अमर बना रहा है। अमरपुरी का मालिक बना रहा है। कितनी खुशी होनी चाहिए। कौन छिपके छिपके खुशी में नाचते हैं अंदर। मेरे को एक दिन देखी, छोटे हाल में बाबा डांस कर रहा था, ऐसे पब्बों पर नाच रहा है। तो मैंने कहा बाबा, अंत देखा अभी तक कई बार याद आता है, नाच रहा है बाबा अंदर। चल भाई, पापा कर रहा है, नाच रहा है, ऐसे ऐसे कर नाच रहा। देखा कितनी बाबा को खुशी है। अगर खुशी में रहने का आदत नहीं है ना, ये भी जैसे कि मरीज है। जैसे ये अच्छी एक्सरसाइज है हेल्दी बनने के लिए, माइंड का खुश रहने के लिए, हल्का बनने के लिए।
मेरे को कभी भी बोलते हैं ना नाच रहा, मैं 1 सेकंड में थोड़ा कोई नाच आने से बाबा कहें फेल, दे अब मनी, हट जा। थोड़ा भी देहाभिमान खुशी में रहने नहीं देता। अच्छी ये है अंदर से गो तो प्रैक्टिस करके, जितनी बाबा ने मुरली खुशी में की चलाई, मैं देखूं दिन भर में इतनी खुशी मेरे पास है। और सेवा इसलिए हो रही है जो खुशी में न रह सकूं। कितनी खुशी होनी चाहिए। यह है मृत्यु लोक, वो है अमर लोक। इन बातों को नया कोई तो समझ न सके, उनको मज़ा ही नहीं आएगा जितना पुरानों को आएगा। दिन पर दिन वृद्धि को पाते रहते हैं, निश्चय पक्का हो जाता है। इसमें सहनशीलता भी बहुत होनी चाहिए। आया अंडरलाइन सारी। यह तो आश्रित दुनिया है, दुख देने में देरी नहीं करते। आश्रित दुनिया वाले दुख देने में देरी नहीं करते। तुम्हारी आत्मा कहती है हम अभी तो बाबा के श्रीमत पर चल रहे हैं, हम तो संगम युग पर खड़े हैं, बाकी सब कलह युग में है। अब हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। पुरुषों में उत्तम पुरुष पढ़ाई से ही बनते हैं। हम तो पुरुषोत्तम बन रहे हैं, पुरुषों में भी उत्तम पुरुष इस पढ़ाई से हम बनते हैं। पढ़ाई से ही चीफ जस्टिस बनते हैं ना। तुमको तो बाप पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई से ही अपने पुरुषार्थ अनुसार पद पाते हो। जितना जो पढ़ेंगे उतना ग्रेड मिलेगी। इसमें राजाई की ग्रेड है, वैसे उस पढ़ाई में राजाई की ग्रेड कभी नहीं मिलती है। तुम जानते हो हम तो राजाओं का राजा बन रहे हैं। तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। हम डबल से ताज बहुत ऊंच बनते हैं। भगवान बाप हमको पढ़ाते हैं। कभी कोई समझ न सके निराकार बाप कैसे आकर पढ़ाते हैं। मनुष्य पुकारते भी है पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ, फिर भी पावन बनते नहीं है। बाप कहते काम महान शत्रु है। तुम एक तरफ पुकारते हो पतित पावन आओ, अब मैं आया हूँ कहता हूँ बच्चे पतित पना छोड़ दो। मैं आया हूँ कहता हूँ बच्चे पतित पना छोड़ दो। तो तुम छोड़ते क्यों नहीं हो? ऐसे थोड़े ही बाप तुमको पावन बनाए और तुम पतित बनते रहो। ढेर ऐसे पतित बनते हैं। कोई सत्य बताते हैं, बाबा मेरे से यह भूल हो गई। बाबा कहते हैं कोई भी पाप कर्म हो जाए तो फौरन बताओ। कोई सच कोई झूठ बोलते हैं, कौन पूछता है तुमने से? मैं थोड़ी एक के अंदर के बैठ जानूंगा, यह तो हो न सके। मैं तो आता ही हूं सब राय देने के लिए। पावन नहीं बनेंगे तो तुम्हारा ही नुकसान है। मेहनत कर पावन से फिर पतित बन जाएंगे। मेहनत कर पावन से फिर पतित बन जाएंगे तो कई कमाई चट हो जाएंगी। मेहनत की पावन बने, फिर पावन से फिर पतित बने तो कई कमाई चट हो जाएंगी, लज्जा आएंगी। हम खुद ही पतित बनने पड़े हैं, फिर दूसरों को कैसे कहेंगे पावन बनो? मुख से निकलेगा नहीं। ये बाबा ने प्रैक्टिकल दिखाया था। बाबा ये इतना अच्छा ज्ञान सुनाने वाली, इतना अभी वो सुना नहीं सकती है।
बच्ची, गुना लग गया संशय का, बोल न सकेंगी, अच्छी से अच्छी स्पीकर, बोल न सके, संशय का लग गया गुना, बह गया सारा। लज्जाएंगी, हम खुद ही पतित बने हैं, फिर दूसरों को कैसे कहेंगे पावन बनो, अंदर खाएंगा। हमने कितना फरमान का उल्लंघन किया है। यहां तुम बाप से डायरेक्ट प्रतिज्ञा करते हो, जानते हो बाबा हमको सुखधाम शांति धाम का मालिक बना रहा है। हाजुरा हजूर है सामने, शांति धाम सुख धाम का रास्ता बता रहा है। वो हाजरा हजूर हमारे सामने है, हम उनके सन्मुख बैठे हैं। इनमें पहले ये नॉलेज थोड़ी थी, इनमें भी ये पहले नॉलेज थोड़ी थी। न कोई गुरु ही था जिसने नॉलेज दी। अगर गुरु होता तो सिर्फ एक को थोड़ी ज्ञान देता। गुरुओं के फॉलोअर्स तो बहुत होते हैं ना, एक थोड़ी होगा। ये समझने की बातें हैं ना। सतगुरु एक ही है, वह हमको रास्ता बताते हैं, हम फिर दूसरों को बताते हैं। अब ये मैसेज तैयार करते जाओ, सतगुरु एक है, वही हमको रास्ता बताते हैं, हम फिर दूसरों को रास्ता बताते हैं। ऐसे है ना। तुम सबको कहते हो बाप को याद करो, बस ऊंचते ऊंच बाप को याद करने से ऊंच पद मिलेगा। तुम राजाओं के राजा बनते हो, तुम्हारे पास अनगिनत धन होगा, तुम अपनी झोली भरते हो ना। तुम जानते हो बाबा हमारी झोली खूब भर रहा है। कहते कुबेर के पास बहुत धन था, वास्तव तुम सब हरे कुबेर हो। उसके बाद बहुत कहानी है, तुमको वैकुंठ रूपी खजाना मिल जाता है। खुदा दोस्त की भी कहानी है। उनको जो पहले मिलता था, उनको एक दिन के लिए बादशाही दे, भाई पूरी ब्रज को पार करने के लिए जो पहले आया ना उसको राजाई मिल गई एक दिन के लिए भी। खुदा दोस्त की कहानी है। यह सब दृष्टांत है। अल्लाह माना बाप, वह अव्वल दीन रचता है, फिर साक्षात्कार हो जाता है। तुम जानते हो बरोबर हम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हैं। अच्छा, मीठे मीठे बोलो, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए सार। इस समय इस आशीष दुनिया में, इस आशीष दुनिया में बहुत बहुत सहनशील बनकर रहना है। कोई गाली दे, दुख दे तो भी सहन करना है। बाप की श्रीमत कभी नहीं छोड़नी है। दूसरा, डायरेक्ट बाप ने पावन बनने का फरमान किया है, इसलिए कभी भी पतित नहीं बनना है। कभी कोई पाप हो तो छिपाना नहीं है। मैंने बहन ऐसे कहे, किससे जो कुछ हो गया हो, गुलजार दादी आजकल क्लास, उसके पहले खलास कर दे देवे, रख दो यहाँ। क्या समझते हो निमला बहन? विचार करो, खलास हो जावे ना। जो कुछ हो गया खत्म, बस सच्चा लिख करके या एक बाक्स रख दो, दोनों जगह ओम शांति भवन या, हाँ, काम उतर जाए सबका। ठीक है,
छोटी मोटी जो भी बात है। अच्छा, वरदान। संगठन में रहते लक्ष्य और लक्षण को सामने बना, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव है। संगठन में एक तो को देखकर उमंग उत्साह भी आता है, अलबेलापन भी आता है। संगठन में उमंग उत्साह भी आता है, अलबेलापन भी आता है। सोचते हैं, यह भी करते हैं, हमने भी किया तो क्या हुआ। इसलिए संगठन से श्रेष्ठ बनने का संयोग लो। संगठन से श्रेष्ठ बनने का संयोग लो। हर कर्म करने के पहले यह विशेष अटेंशन वाला लक्ष्य हो कि मुझे स्वयं को संपन्न बना करके सैंपल बनना है। मुझे स्वयं को संपन्न बना करके सैंपल बनना है। समझा? ऐसे तो करो, सहज बात है। फिर बार बार इस लक्ष्य को इमर्ज करो, लक्ष्य और लक्षण को मिलाते चलो तो शक्तिशाली हो जाएंगे। बार बार अंदर से लक्ष्य को इमर्ज करो, लक्ष्य को भूलो नहीं, इमर्ज करो। फिर दोनों को मिलाओ, लक्ष्य लक्षण को, तो शक्तिशाली बन जाएंगे। कितना बड़ा टूल मिला। स्लोगन, लास्ट में अगर फास्ट जाना है, पर लास्ट आया पर फास्ट जाना है, तो इस साधारण और व्यर्थ संकल्प में समय नहीं गंवाओ। सहज विधि, साधारण भी नहीं, व्यर्थ तो आ नहीं सकता। ओम शांति। कितना बाबा को प्यार करें, ऐसी मुरली सुनाता है। ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बुधवार है ना? Today is Wednesday, isn't it? Which is the day of Mama. मैंने बहुत बारी बताया होगा। I must have mentioned many times, but I'll tell you again. सोमवार है शिव बाबा का दिन। Monday is the day of Shiv Baba, गुरुवार है मंगलम भगवान and Tuesday is the day of Vishnu. मंगलम भगवान विष्णु का दिन। They call him Mangalam Bhagwan Vishnu. And Wednesday, Mama's day, the day of the intellect. Thursday is the day of the Satguru, the day of Jupiter, so that there should be good omens on you. Friday is the day of thanks, and Saturday the day of giving up or giving donations so that the eclipse is removed, and Sunday the day of the the day of the Son of Knowledge and the sons of the Son of Knowledge, S-U-N and S-O-N, and then again Monday. And so this 7 days course has a great deal of importance, and
those who are here in Madhuban sitting for 7 days, giving themselves the opportunity to be fully in the bhakti. We had 14 years of bhakti. You must have heard the news of that. And the experience of that 14 years you can do in 14 days in Madhuban. Why? Because it is the place of blessings and the place of tapasya. It is the place where the Supreme Being displayed his characteristics. And when you're here in Gyan Sarovar or at Pandav Bhavan, there is the feeling of the amazing wonder of Baba that in the entire world you must have seen, and I have also seen probably more than you. I must have seen more than you. And there are no other pilgrimage places that are like this. There are pilgrimage places of every religion, the place of birth of the founding fathers. Do you have the intoxication of which pilgrimage place you are sitting in? Because this is a pilgrimage place for every child of the Supreme Being, so that they can see the vision of God and become themselves exhibitions of God. And when I see all of you, I see the soul filled with purity, peace, happiness. And we live in such a place which produces this effect. We sit in such a place and directly listen to the words of God Himself. God speaks, and we listen. And so at every moment there is some or another story that I'm reminded of. When we came to Abu, we were at Bikaner House and Alvar House. These are the residences of the kings whose summer palaces was here. And so Baba said, you go and serve the kings. And so the Queen Mother of the King of Bikaner was there, and Baba said, serve her. So I went there, and I went into her little office, and I said to her, the secretary, I said, I want to meet the Queen Mother, and I remembered God with a lot of love, and Baba had spoken this in the Murli, and in that day I went. I got an appointment. And so I went to meet the Queen Mother. And I didn't get the idea of bringing anyone with me. I went alone. And she met me with so much love. She had a lot of, she was a devotee, and she didn't know that there is the possibility of sharing a discussion about bhakti. She felt that, yes, I am here because of the blessing of God. And she said, no, I do bhakti in the night, and everybody is sleeping, and I do my bhakti at 12 o'clock at night, and until I see a vision of Vishnu, I cannot go to sleep. And we are sitting in such a place where we can see him. So she says, I go to sleep and I feel, who should I tell that who had sent you to me? Then Baba had said, go and serve this soul, and then I went to serve her. And at that night, Baba said, that was the time when we had the beggary part. So in the yogi whose eyes were remaining open, sitting in a V shape from 2 to 5, we would be about 25 to 30 sisters and Baba and Mama sitting in front, and they gave drishti to us. We sat like that in a V shape, and the light
of that room was visible. We could see from that room we could see the town. And Baba would give drishti. And he said, did you remember the mother? And he said, I'm asking, did you remember her? Because she is a devotee, that Queen Mother, and tell her that I talked to her. I said, yes, Baba had said. So you have to remember her and emerge her, because then she can start talking to the Father. So Baba got us to do these kinds of service, and then I took Dadi Kumarka to see her, that Queen Mother. There has to be so much intoxication. Who is the teacher and what is the study? What are we learning and for what reason are we studying this? Baba says those who understand these things, those children who understand this, are very, very few. And you have to understand in such a way that others, when they see you, they wonder. I say, what is this person speaking? It feels as though they're talking the words of God. And so there was the matter of blessings that we discussed yesterday evening. Baba had said the sannyasis are people that people go to for blessings for long life and child and so on. But Baba is giving you the blessings of being able to make effort or being inspired to make effort. Otherwise, he doesn't give you a blessing like that. It is those who make effort today to whom Baba gives blessings. And those who do true effort, they receive success as a blessing. In effort, there is a natural development in their effort, and they will say that this is Baba's blessing. If you're going to make effort, it should be in such a way, the way that Baba says it should be done. Two steps of yours, and it used to be 8 steps of his. And now it's 1 step of ours and 1,000 steps of Baba. It's amazing, the ratio. Just you have to make sure that you don't stop taking the steps of effort. Otherwise, Baba cannot do anything. You cannot do anything without Baba. You say, oh, what shall I do? This thing happened. That is called carelessness. You didn't accept Baba's order that you stand to attention and be in Baba's remembrance. You can't even use your body as an excuse. The effort of the soul cannot be like a crippled effort. It's no use to make effort like a crippled person. And so these words that Baba spoke, they strike the heart, and then you start making serious effort. It cannot be casual. There can never be a difference between your inside and your outside. Your eyes should be such, totally clear. Hold yourself in the stage of the soul. I am a soul. I belong to the Supreme Soul as His child. I am a pure soul filled with the love of God, and that attracts God. This is an experience you must try out. So Dadi is suggesting to have a program so that people can experience these things from the depth of their heart, so that the soul can really understand itself and realize that I belong to the Supreme Soul. And then Baba pulls the soul, and the soul freed itself from being here by Baba's signal. One is Baba's direction,
दूसरी है श्रीमत, and the other is Srimat. तीसरा है इशारा. A third is a signal. समझदार डायरेक्शन पर चलेगा. If you are intelligent, you will go according to the directions, how you sit, eat, move around, do things according to directions. There are directions for those types of activities. ये हमको डायरेक्शन मिले हुए हैं. So we got directions. This is how you get up, this is how you eat, this is how you move around. चलना भी सिखाया था. And so Baba taught us how to walk around and be in silence, not talk. When you go for walks, do it in silence. 1, 2, 3 miles in silence. Don't talk to each other. सिखाया है बाबा ने. Baba taught these things बातें करने की आदत बहुत है. because people have a habit of talking about all sorts of stuff. And Baba used to check us. He would send Didi to see who's nattering. क्या बात कर रहे हैं. What are they talking about? जब मधुबन मिला है ना, क्या बात. So when you came to Madhuban, it means you come to die, absolutely to die. आत्मा सारा The soul पुराने अनेक lets go of all the old things of many, many lives. क्योंकि रावण राज्य में रहे हैं. Because it lived in Ravan's kingdom for a long time. रावण ने सब कुछ भाग And Ravan stole all of our treasures, all the fortune of the kingdom that we had received from God. It was stolen. It wouldn't let anybody go. सन्यासी महात्माएं भी Even the sannyasis and mahatmas cannot take birth through the power of yoga, regardless of their level of purity. बनाता है. Baba makes us so pure so that our birth takes place through yoga. There has to be that much powerful yoga, and the soul has to be that much pure so that its birth is of that caliber through yoga power. अपवित्रता की अंश न रहे. There shouldn't be the slightest trace of impurity remaining. So you have to look at yourself in regard to that. Check it. पवित्रता की वैल्यू. आगे हम पवित्रता सप्ताह Previously, वो दिन अभी नहीं है. पवित्रता सप्ताह रखते थे. we used to have a week for purity, a week for peace. Maybe Sister Chakadari remembers this. And so we had a whole week of purity पूरी पवित्रता. where we just focused on the details of purity, and a week for peace. So each moment, each second also, we must check ourselves to see that we're not even touched by impurity in our thought, or anybody's vibration has touched me, influenced me, or reached me. My vibration has to be so powerful that no one around me can have an impure thought. एक दिन मधुबन में Once in Madhuban, when Baba was in Sakar, 500 लोग थे. at that time we may be about 500 people. It was the first time 500 had come to Madhuban. And Baba had such an inspiration to keep us in total silence. And somebody came and he saw, oh, there's no sound here. Everything is quiet here. And normally when you go to temples, there's all kinds of activities going on that are quite noisy, but there isn't anything like that here. He was looking, 500 people living. Pandabhavan was very small at that time. Perhaps there wasn't even the history hall by that time. But there was no sound. अभी हमारे 1100 और पांडव भवन में And now in Gyan Sarovar and Pandabhavan, there also needs to be that kind of silence. तो जो आज बाबा ने बोला, जो लोग शांति साई दुनिया में The मांगते people हैं, who are searching for peace in the whole world, they need to know that they can get it from here. शांति की देव यहाँ बैठे हुए हैं. And that the divine deities of peace, the bestowers of peace, are sitting here. गुणों में देव. One is to be a deity in the form of having divine virtues, but the other is to be a bestower of peace. तो ये
So there has to be that feeling inside that you wish to make that level of effort, and then Baba will fulfill that desire and you will be able to. Sometimes people give donation because of their true feelings, and Baba gives the return of that. And whatever is the kind of service you do, you receive the accumulated return of that. And if you do wrong things, then whatever is the accumulation of service you had done, it goes into loss. Baba has said, you did this, you accumulated it, but then you did wrong action, your intellect got locked up. And whatever you had taken from God in the first place, it automatically is finished and no longer exists for you. And then once again, make the soul absolutely true and pure, so that Baba again has mercy on the soul. I have seen this also. Compassion, mercy, forgiveness. Baba can truly forgive if a person is really apologetic and really repents. But if you repent from the depth of your heart, then you realize that you had finished off all you had accumulated, and then once again Baba will give you the mercy and compassion and say, okay, let's make that child fly. He is my child anyway. And he will give a lot of love and make that child fly. Everything of the past is forgotten. Baba applies the full stop. It's very difficult for a person to forgive themselves. And so how can we finish our sins? We look in the mirror and we see, yes, I did that. But with so much love, Baba causes you to forget that. And now these are the moments when this is going on. Whether you accept it or not, sit quietly and ask yourself, are you going to take the benefit of these moments, or are you going to still leave it to the future? If you say, yes, it's fine, but are you still in those thoughts? Because if you are, then these moments of opportunity will disappear and they will not come back. Do not see anyone as being to blame for anything. But it may be somebody did something, but always think that I am to blame for looking at them and thinking about their fault. Think about this. This is a very deep philosophy of karma. The moment when we have the thought that someone is blameworthy, I see their action and I do this thought, and instead of having Manman above, I'm thinking about the person being to blame, then this is a great loss for me. And then you cannot enjoy the company. You will cry and you will experience depression in the gathering because you find fault with people. Do not find fault with anyone. Do not allow anyone's fault to sit on your memory track. Baba never saw anyone's fault. He said, this is my child, so with what eyes do I see my child? And neither he sees that nor he speaks about it. Because if you speak about it, then it becomes very firm. Even if that mistake is gone, but you remember them for that mistake, because you have talked about it, you make it your own possession. And then whatever is very good about yourself, it's not visible to anyone and you're not able to do good action. And whatever you're doing, it doesn't work out. So at the present time, very, very deep philosophy of karma is operating. And this is why, again and again, in every Murli, Baba says,
Baba is teaching to you souls, you children, see who is the one who is teaching you and what is he teaching you. Each and every point of Baba strikes your heart in such a way so that nobody else's stuff can penetrate your heart. And this is why Baba says, understand drama very, very well. Very few of Baba's children understand drama. Whatever it is fine. For that you need tolerance. If you go into the depth of all of the knowledge, and in order to bring it into practical form, you need to have great power of tolerance. And if you have, it makes you very intelligent and able to keep your memory track clean. And you're able to give help. A drama is very good. It is fixed and predestined, Baba has explained. There is nothing new. But very patiently, you have to explain this to yourself. And just as Baba and Mama, so you also do the same way. And this is why it's good to keep the picture of Mama and Baba. People ask us, but yes, I keep it. If you see Mama's face, Baba's face, and then see your own face, these are mirrors for you. And so you have to see in the mirror to see how you are. So Mama is a mirror for you to check how you look, what you are. How did these people achieve the status of Lakshmi and Narayan is visible through their face. In order to go back to the home, you sit ready. And in order to come into the golden age, you have to be a very good quality person of the sanskaras of a person who will take a high status. Emerge those sanskaras here, so that they are visible practically. Because these are the ones who indeed are engaged in the establishment of the golden age, and you will come. So you have to create such an atmosphere so that in a second it is as if somebody has come into heaven when they come around your vibration. Sweet children, see this. Baba doesn't only speak the Murli at the time of the Murli, but through the whole day, Baba is going around and checking all of us. He's circling around. I experience that Baba is watching what this one and that one is doing. Do not think that Baba is not seeing. Be very attentive that Baba is checking to see whether you are studying or wasting your time. You came to Madhuban as clouds to fill yourself. You are receiving so much nourishing food. You come to refresh yourselves and to charge your batteries. And so do not waste a second of this precious time. Sweet children, your duty is to make everyone firm and to show them the clear, accurate and firm way to permanent peace and happiness. Remain in peace and give the alms of peace to others. Baba uses the word bakshish. And so give a donation. People come to get something, so give them that alms of peace. Understanding what deep secret requires an unlimited intellect. Answer. Whatever are the scenes of drama, the time at which they happen only at the time when they're supposed to happen.
And so remember this, whatever scene has to happen, it will happen at the time when it has to happen. It has its accurate age. Baba also comes at his accurate time, and there isn't a difference of even a second. It is exactly after 5,000 years that Baba comes and incarnates. In order to understand this deep secret, you need an unlimited intellect. The song is, "The world may change, but I will not change." It's a very lovely song of Baba's. The world may change, but the promise that I have made, I will not change it. Om Shanti. To the sweet spiritual children, the spiritual father sits and explains. He explains the way to the children. Explanation means to tell the way to the world of peace and the world of happiness. At this time, all people in the world require peace. Each one wants it individually. So the different departments we have, how to speak, how to write, all these things. Who will be the instrument to note down these things? Anthony, do you understand? So note these things. Each person wants peace individually. Everyone says, I want peace of mind. But where are they going to get it from? The ocean of peace is in fact the Father. And so draw people's attention to that source from where you get this inheritance. You get the inheritance of peace individually, and peace is also attainable wholesale. So see how great these words are. Individually and wholesale, you get peace from the One. That means everyone receives peace. Those children who study can understand that we have come here in order to get our inheritance of peace, and so we are making our own effort for that. And we also are giving others the information about the way this peace has to happen in this world, whether somebody comes or doesn't come. It is the duty of you children to give peace to everyone. But they can't understand. What's the point of only 2 or 4 getting the inheritance? Someone is told the way, but due to not having faith, they are unable to make others like themselves. If somebody hasn't understood properly, then they're not able to tell it to anyone else. Those who have faith in the intellect, they understand. And so you got this who feels that they have this vow with Baba that they will definitely do this. There is a difference between an inheritance and a gift from Baba. Every day you have to make the effort to take the inheritance, and it's as if you're receiving it as a gift. So you need such a good intellect to take it as a gift. He gives blessings. They say, may you be very wealthy, may you have a long life, but just by saying it you don't get an inheritance, a blessing. People ask for blessings. If you want peace, well, you have to make effort for peace. So which ones of you feel this?
that you are getting the inheritance of peace. You make the effort, but yet it's as if it's a gift. Who of you feel this, that you're receiving this as a gift? Raise your hands from the depth of your heart that you're receiving the gift of peace from Baba. And as you listen to the Murli, you get that feeling that Baba's giving everything to you. And what you are catching at the present time, you're making the effort for the inheritance, but Baba is so pleased with you that he gives it to you as a gift. These are the moments, and God is speaking. They want a blessing, but it is explained to them that if you want peace, then you have to make appropriate effort. By making effort, you receive everything. In the path of bhakti, they take so many blessings from the mothers, fathers, teachers, gurus. They are asking for blessings to be peaceful and happy, but they're not able to remain that way because there are so many people. So how is it possible for them all to have peace and happiness? It is sung that there are the givers of peace, and it comes into the intellect. You say, "O Supreme Father, Supreme Soul, give me the alms of peace." In fact, bakshish is something that you pick up and you give to somebody. And so then it is said, this is bakshish for you, this is a prize for you, a gift, free. So it doesn't matter how much bakshish you give, house, clothes, whatever. It's temporary. People give these things to each other. Rich people give them to poor people or even to other rich people, but this is peace and happiness, and it is a permanently remaining gift or bakshish, not temporary. So in this Murli, these things touch the heart so deeply. Anyone could come and they should be given the gift of permanent peace, the bakshish of permanent peace. Nobody can give and have a life of peace and happiness. They cannot give that to anyone. Only the one Father can give it. He is called the ocean of peace, happiness, and purity. People praise the highest on high Father, and they understand that they can get peace from him. But still they go to the sadhus and saints because it is bhakti's path, the path of bhakti. And so they keep wandering around to all the different places, north, south, east, west. But those efforts are for temporary benefits, and you children have stopped doing all that. You also write from the unlimited Father. You can get 100% purity, peace, and happiness as your inheritance. Here, the world is 100% impure, sorrowful, and peaceless, but people don't understand. And they say that, well, the rishis and munis are pure, but they still got born through vice. The most important thing is this. In Ravan's kingdom, it is not possible for there to be any purity. Purity, peace, and happiness, the ocean of all these things is only the one Father. You do know that from Shiv Baba, for 21 births, that is, for half of the kalpa, that is 2,500 years, for 2,500 years we receive this inheritance. You know. I'm telling you this line again. You know. Open your eyes, please. You know
I'm not giving you a lullaby to make you all go to sleep. You seem to be enjoying this lullaby, but you're an army getting orders. And you're here to take from Baba. So for 2,500 years you are receiving the inheritance. This is a guarantee. For half a kalpa it is the world of happiness, and half a kalpa it is the world of sorrow. There are two halves in the world, and Baba gives you these slices and points for opening up your eyes. Half the cycle sorrow, half the cycle happiness. It is for this that you are taking the kingdom. There are two. One is the new, the other is the old world. But when is the new world and when is the old world, people do not know. The age of the tree is absolutely accurate, but nobody can say what it is. And now through the Father you have come to know this tree. It is a 5,000 years old tree, and you know its accurate lifespan. And you can't tell the lifespan of other trees. They can figure it out more or less, but then there can be a storm and then the tree falls and it's dead and over. People also get a sudden death. And the age of this unlimited tree is 5,000 years exactly, and there isn't a single day plus or minus. It is a fixed predestined tree, and there is no possibility of any difference. In this drama, every scene that happens at whichever time has to happen at that time only. So if I'm not okay, then I have to fix myself. But whatever scene, I can't be disturbed by it, because it's going to be exactly that, and it repeats exactly, and the age is accurate, the time is accurate. Baba has to come in order to establish the new world. And he comes accurately at the right time, and there cannot be a difference of even a second. And now, when you understand that, then you've got an unlimited intellect. Until then, it's limited. You need an unlimited intellect. And it's only by understanding this. Is this right? How can the intellect go into the unlimited state? The intellect has become unlimited. You cannot understand after. You do understand how after 5,000 years, how Baba comes and incarnates. And this is why it is said Shivaratri. For Krishna, they say Janmashtami. And each and every word has significance. And the reason why they say Shivaratri and Janmashtami for Krishna, you can't say Janmashtami for Shiv Baba. Only you can say the Ratri, the night, because if he has a birth, then he has to have a death. And people speak about the birthday of people, but for Shiva, it's always the night of Shiva. And in the world, nobody knows about this, but you understand why people speak about Shivaratri and why they don't say Janmashtami for Shiva, because his birth is divine and unique. And no other soul can take birth in that way. And nobody knows this. Shiv Baba, when and how does he come? He has given us so much understanding. He's told us when and how Shiv Baba comes. And what is the meaning of Shivratri? You know the meaning of the night of Shiva. This is unlimited. The night of Bhakti is finished. The day of Brahma comes. And then it's the day and the night of Brahmans also. So it's not just the game of only one Brahma. Now you also know. What do you know? You know that the day is about to break. And as you continue to study, you will reach your home. You keep studying, and then you go and reach your home. And then you will come in the day.
For half the kalpa it's day and half of the kalpa it is night, and it is spoken like this, and you will study and study and end up in the home you will go. But it doesn't come into anybody's intellect. Those people think that the age of the Kali Yuga is 40,000 more years and the golden age is 100,000 years, and then they can't calculate the half of the cycle. You understand the beginning, continuation, and end of the whole cycle. After 5,000 years, the world cycle rotates once again. There is just one world, and as you continue to play your part, you get troubled. And they say, well, we don't want this play of coming and going. Suppose you would be coming and going for 8,400,000 births, then what do you think would happen? It is because of not knowing that they have increased the age of the kalpa. Now you children are studying directly in front of the Father, and you get that feeling inside. So do you nod your head? You do get that feeling? I am sitting here and Baba is talking to me. Are you sitting like this, practically experiencing this? Definitely he has to come at the auspicious confluence age, and nobody knows when and how he comes. You children know. And so you have to have so much fluttering in your heart of happiness. Because each and every kalpa you get the inheritance from Baba, and that means that you attain victory over Maya. You attain victory and then you get defeat. This is the unlimited victory and defeat. Those kings get a lot of victory and defeat. They get into a lot of wars. If they have a small war, then they say, well, we won the war, but what did they win? A couple of feet of land. And in between the war stops, but if you stop your study, there will be conflict. They get into big wars and then they get victory. There are first of all just a few kings. First of all, it is the kingdom of Lakshmi and Narayan, and then other kings start coming later on. Just as you see the Pope, first of all there was one, and then number-wise all the other successive popes came along, because they die and then new one comes. You children know that Baba has made us immortal and has made us and is making us into the masters of the world of immortality. So you should be very happy about that. Daddy wants to see if you are actually happy, if there's any hidden person dancing in happiness, knowing that this is true. Once I saw in the small hall, Baba was getting somebody to dance. He was dancing with his feet. And sometimes I remember little scenes like this. Baba was dancing inside. He was walking along and he was dancing as he was walking, a light, springy step, because Baba had so much happiness knowing who he was and who he is becoming. If you don't have the habit of becoming filled with happiness, then this life has no meaning. It's as if you are a sick person in the hospital. So it's a very good exercise to become healthy, is to remain happy and stay light. In a second, if anybody asks me to dance, I can. If somebody can't, I will say, fail, you're body conscious. If you, even the slightest ego doesn't allow you to have any happiness. So you have to practice the way Baba has told you, ways to be happy. There isn't a single day where I'm not happy.
सेवा इसलिए थोड़ी है That's not why we do service, so that we get happy if we have it or not if we don't. कितनी खुशी होनी चाहिए You have to be so happy. This is the world of death, and that is the world of immortality. नया कोई तो समझ नहीं सकता New people cannot understand these things. They wouldn't enjoy them as much as the old ones enjoy them. As the days go by, the gathering is getting bigger and bigger, and faith is becoming more and more firm. In this, you have to have a lot of tolerance. आया अंडरलाइन Underline this. You require enormous tolerance. This is the devilish world where people do not hesitate to give sorrow to each other. तुम्हारी आत्मा कहती है Your soul says, हम अभी तो बाबा के now पर चल रहे I am following Baba's Srimat. हम तो संगम युग पर I am standing at the confluence age, सब कल है and everybody else is in the Iron Age. अब हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं Baba is making us the high-level human being. We are becoming the highest human being, and among people there are elevated people, and that comes through this study. It is through study that someone can become a Chief Justice, for example. पर आते हैं Now the Father is teaching you, and it is through this study that, according to your effort within it, you create your status. As much as you study, to that extent you get a high grade, and this is the grade of being a king. There's no other study by which you get this kind of kingly grade. You know that we are in the process of becoming the kings of kings. तो अंदर में कितनी खुशी And so there should be so much happiness within to know that this is so. हम डबल से ताज We are becoming the most elevated ones with a double crown. God the Father is directly teaching कभी us. कोई समझ नहीं सके निराकार बाप कैसे Nobody else could understand how the incorporeal Father comes and teaches. People call out to the purifier of the impure, asking to be made pure, but they don't become pure. बाप कहते हैं काम मान And Baba says, lust is the greatest enemy. तो एक तरफ पुकारते हो पतित पावन आओ On one side you call the purifier, and now I have come, कहता हूँ and I'm telling you बच्चे पतितपना छोड़ दो that you have to give up all the ways of being impure. I have come, and I'm telling you, children, give up all forms of impurity. So why don't you give it up? ऐसे थोड़े ही बाप तुमको पावन बनाए और It's not that Baba makes you pure and then you carry on being impure. ढेर ऐसे पतित बनते हैं There are many who become impure like that. A few tell the truth and they say, Baba, I made this particular mistake. बाबा कहते हैं And Baba says, पाप कर्म हो जाए if you've done any sinful action, then immediately speak to Baba about it. कोई सच कोई झूठ बोलते हैं Some tell the truth and some don't. कौन पूछता है Who is asking you? मैं थोड़ी एक एक के अंदर के बैठ I'm not going to sit and look at what's going on inside everyone. सकता This is not possible. मैं तो आता ही हूँ I come simply in order to give you advice. पावन नहीं बनेंगे तो If तुम्हारा you don't become pure, then that's your own loss. मेहनत कर पावन से फिर पतित Make effort to become pure, पावन से फिर पतित बन but then you become impure, कमाई चट हो जाएंगे and then all of your accumulated income is finished. You did make effort, you tried to become pure, but then you became impure. कई कमाई चट हो So whatever was accumulated thus far is finished, and you will be filled with the feelings of shame. हम खुद ही पतित बने पड़े हैं That I myself became impure, so how can I tell anybody else to become pure? It would not emerge from your mouth. ये बाबा ने प्रैक्टिकल दिखाया So Baba had showed this in practical. We said, Baba, this one was telling such good knowledge and now they're not able to speak anymore. He said, child, लग गया they got overshadowed by doubt and so they can't speak. अच्छी से अच्छी स्पीकर The very, very good speakers were now unable to speak संशय का because of the shadow of doubt that sat over them and they lost everything.
And they will be feeling shame that they are impure and they can't tell anyone else to be pure. Their conscience will bite because they know that they went against the orders. Now you are making a direct vow and promise to God, and you know that Baba is making us into the masters of the world of peace and the world of happiness, and he is sitting in front of us directly. He is telling us the way to the world of peace and the world of happiness directly in front of us. We are sitting directly in front of him. And this Brahma Baba didn't know this knowledge before, nor did he have a guru who had given him this knowledge. If he did have a guru, he wouldn't give the knowledge only to one person. Gurus always have lots of followers. It can't be just a guru with one follower. This is a simple matter of understanding. The Supreme Guru is only one, and he is telling us the way. And then we tell it to other people. So make this message ready, that there is only one Supreme Guru, and he comes and speaks to us, and then we tell that to other people. This is what's going on, isn't it? You are all told to remember Baba, that's it. Just remember the highest of the High Father and you will attain a high status. You become the King of Kings. And there will be unlimited wealth. You are filling up your pockets and you know that Baba is filling up your pockets fully to the brim. It is said that Kuber had enormous wealth. But in fact, all of you are Kuber. There's a story about Kuber's treasure, and you are getting the treasure in the form of heaven. There is a story of Kudados, the friend of God, and so there was somebody who would give the kingdom for a day to the first person he would meet. This is the story of Kudadost. And these are all examples. Allah means the Father, and Avaldin is the creation, and then there is a vision. You know that indeed through the power of yoga we are taking the fortune of the kingdom of the world. Acha. Say this with Dadi. Good morning. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते. धारणा के लिए साथ. The essence for dharana. इस समय at this time इस आशीष दुनिया में in this whole devilish world आशीष दुनिया में you need to have a very, very high degree of tolerance. Someone may insult you, hurt you. You have to be able to tolerate it. Never give up Baba's Srimat. Second, directly the Father has given you the order to become pure. And so you may not become impure ever. And if you do make a sin, do not hide it. Should we say that if something was done, can we finish it? Can we finish it beforehand? Everything should be finished beforehand, all the old things on your conscience, whatever has happened, it's finished. And then write the truth. We'll have a box here and in Om Shanti Bhavan, and anything on anybody's conscience, you can just put it in the box and be free. Small or big sins. Blessing. Whilst living in the gathering, make sure that your aim and qualifications
समान बनाने वाले, are the same, सदा शक्तिशाली आत्मा भव। and you are the ones who are always the powerful souls who do this. संगठन में When you're in the gathering, एक तो को देखकर seeing each other, उमंग उत्साह भी आता है, you get enthusiasm, अलबेलापन भी आता है। but you also become careless. उमंग उत्साह भी आता है, The gathering makes you enthusiastic, but it also makes you careless. सोचते हैं You think, well, these people are doing like this, so if I do like this, then so what? What's the big deal? And this is why बनने का सहयोग लो, you must take the cooperation from the gathering to become elevated. श्रेष्ठ बनने का सहयोग लो। Take the cooperation of becoming कर्म elevated. करने के पहले Before you do any विशेष karma, attention वाला लक्ष्य हो, you have to have this special attention or aim that संपन्न बना करके I have to make myself complete and become a sample. मुझे स्वयं को संपन्न बना करके I myself have to make myself complete and become a sample. ऐसे तो करो। So this is what you have to do. It's very easy. फिर बार-बार इस Then लक्ष्य को again and again emerge this aim लक्ष्य और लक्षण को मिलाते चलो, and bring the aim and qualifications together so that they become one and you become powerful. बार-बार Again and again internally मर्ज करो, लक्ष्य को emerge your aims. Do not forget. दोनों को मिलाओ, And bring the two together, make the two become one, and you will become very powerful. This is a very good tool you have got. स्लोगन The slogan लास्ट is, में अगर फास्ट जाना है, if at the end you have to go fast, लास्ट आए पर फास्ट जाना है, you came late so you have to go fast, और then व्यर्थ संकल्प में समय नहीं गंवाओ। you cannot waste your time in ordinary or waste thoughts. सहज विधि, It's a very easy method. साधारण विधि, व्यर्थ तो आ नहीं सकता। ओम शांति। Om Shanti. कितना बाबा को प्यार करें, ऐसी मुरली सुनाता है। So you have so much love for Baba because of such a wonderful Murli.